So let's talk about one of the most awaited book or the most requested book for Amish Tripathi, that is fourth book of Ram Chandra series, that is War of Lanka. Basically इस book की announcement कुछ दिन पहले ही हो चुकी थी, and if you are on the internet, if you are following me or Amish Tripathi, then you probably know that the fourth book of Ramachandra series is going to come, and I'm obviously definitely gonna read that book and going to give my point of view about that book. But let's first do the recap, because it's been at 2 years हम सब लोग वेट कर रहे थे फोर्थ बुक का. उसके बीच में दो बुक्स भी आ गई थी, वन इज धर्मा एंड सेकंड वन इज सुहेल देव बाय अमिश त्रिपाठी. सो दैट इज अ काइंड ऑफ अ कोलैबोरेशन बुक ही wrote, and he took a lot of time to complete the War of Lanka, and finally we see that this book is going to published by the HarperCollins, which is one of my favorite publisher, and we are going to talk about this book and what are my expectations. But let's go back to the first three books, that is the Ramachandra series. So there are total 4 books. We can say that if you know these charts, then you probably already know that there is a book called Scion of Ikshvaku, second book is Sita Warrior of Mithila, and third one is Raavan Enemy of Aryavarta. So there are already 3 books, and 3 books ends at the same point where किडनैपिंग ऑफ द सीता, एंड उसके बाद से फोर्थ बुक शुरू होने वाली है वॉर ऑफ लंका, जो कि शुरू होती है किडनैपिंग ऑफ सीता से एंड एंड होती है द एंड ऑफ द रावण, आई मीन द किलिंग ऑफ रावण. सो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक की जर्नी होने वाली है. ऑब्वियसली आई एम एक्सपेक्टिंग दिस बुक इज अराउंड द वॉर ऑफ लंका इज 300 to 400 pages again depends on how many there are twists and turns in the book. But let's first talk about first 3 book. फर्स्ट बुक इज राम साइन ऑफ इक्ष्वाकु. अगर आपने ये बुक पढ़ी हो तो शायद आपको पता होगा. दिस बुक इज ऑल अबाउट द जर्नी अबाउट द राम की कहानी क्या थी, उसका बचपन कैसा था, उसने बचपन में क्या क्या चीज़ें की थी, उसके भाई के बारे में, देन उसके पेरेंट्स के बारे में, अ लॉट ऑफ थिंग्स. इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड बिटवीन द कैरेक्टर्स, देन इन द फर्स्ट पार्ट ही मेंशन्ड ऑल द कैरेक्टर्स. आपको कैरेक्टर्स याद रखने की जरूरत ही नहीं है, बट प्रोबेबली आपको रामायण पता होगा, तो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर यू ऑलरेडी नो in the Ram Chandra series, and obviously there are a lot of characters. So this book starts with the journey of the Ram from childhood, and उसने बचपन में क्या क्या किया था, उसकी जर्नी कैसे थी, उसके पेरेंट्स क्या कैसे थे, उसकी टीचिंग कैसे थी. अबाउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स यू आर गोइंग टू फाइंड इन दिस बुक. एंड दिस बुक इज एंड्स अबाउट, उसके बीच में हो जाती है राम और सीता की वेडिंग भी हो जाती है. उस टाइम पे रावण भी वहाँ पे होता है, अगर आपको पता नहीं हो तो. सो उस टाइम की जर्नी वो सारी राम से लेके, आई मीन द बॉर्न ऑफ द राम टिल द किडनैपिंग ऑफ द सीता. तो यहाँ तक की सारी जर्नी यू विल गेट इनटू द बुक कॉल्ड राम साइन ऑफ इक्ष्वाकु. अगर आपने पढ़ी नहीं है तो डोंट वरी, इस पर मैंने ऑलरेडी एक रिव्यू वीडियो बना दिया है. यू कैन जस्ट गो एंड चेक दैट वीडियो एंड यू विल हैव द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द राम साइन ऑफ इक्ष्वाकु. देन द सेकेंड बुक कम, दैट इज सीता वॉरियर ऑफ मिथिला. One of my favorite book, because the female character is so strong, and it was one of the best experience to read the Sita Warrior of Mithila, and that is something I really love about this book, because इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जो मेरे लिए नहीं थी. Obviously the one thing that you should understand when you are going to read such kind of books, that you have to keep your perspective aside, क्योंकि author ने उसके हिसाब से लिखा होता है. If you already know the Ramayana and if you are going to connect both the things, then you will never get a different perspective. So it's better to put your perspective down and try to understand the new perspective about Sita Warrior of Mithila. So again, this book starts सीता की जर्नी, पूरी सीता की जर्नी, सीता कैसे बड़ी हुई थी, सीता की लाइफ में क्या क्या था, उसके लाइफ में क्या क्या हुआ था, उनके लाइफ में क्या क्या हुआ था, उनका बचपन कैसा था, वो राम से कैसे मिले, एंड अबाउट ऑल ऑफ दो स्टफ यू विल फाइंड इन दिस बुक सीता वॉरियर ऑफ मिथिला. एंड ये बुक भी सेम एंड होती है एट द सेम पॉइंट, जहाँ पे अगर आपने एंडिंग पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि ये बुक सेम होती है किडनैपिंग ऑफ सीता. तो वहाँ पे सेम पॉइंट पे ये बुक भी एंड हो जाती है. एंड द थर्ड बुक इज रावण एनिमी ऑफ आर्यवर्त. तो उसका भी सेम, उसका बचपन वगैरह बताया गया है कि उसका इंडिया में कैसे कैसे था, वो श्रीलंका मतलब लंका में कैसा गया, वो सारी चीज़ें उस बुक में आपको बताई गई है. उसका और राम का कनेक्शन, एंड हाउ ही मेट, how he about the Sita, and everything about the Raavan, उसके बचपन के बारे में, उसके भाई के बारे में, how he was a good person, then what makes him turn out into the bad person. About all of those things you are going to find in this book. Ryan, obviously I don't have this book because I read that book on the Kindle device.
सो इसलिए मेरे पास वो अभी कॉपी नहीं है, बट प्रोबेबली आई विल हैव द कॉपी विद इन अ 1 week or so. So that book is all about the connection about the Raavan and the journey about the Raavan. And again that book is also end at the same point, that is kidnapping of Sita. And uske baad the fourth book, which is the most awaited book, that is War of Lanka, is going to come within few weeks or within a month, we can say that, because that book is already into the publisher and that is already into the printing, and probably we are going to see that book soon. And after that probably meetup bhi hoga. I'm hoping to meet Amish Tripathi this time also. So I met last time like 2-3 years back Amish Tripathi, and hoping that I am going to meet this time also. So what are my expectations from the first? It should be the short and crispy. It should not be a lot of lengthy book, otherwise बोर हो जाता है बीच बीच में. उस बुक में बहुत सारा ड्रामा भी होने वाला है, उस बुक में बहुत सारे नए कैरेक्टर्स भी हमें पता चलेंगे, उस बुक में शायद बहुत सारे लेसन्स पता चलेंगे कि why he did that, what is the reason behind that, and probably while the end of the book we'll get to know the probably some of the philosophies, we can say that how he understood what are the behind the reasons, the basic reasons behind all of those things. So this is something that I am expecting. The book probably 300-400 pages की पक्का होगी. अगर वो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं बनाएगा तो probably it can cut down to the some part. So that is something that I am hoping, because some of these books there are some chapters वहाँ पे unnecessary description दिया गया है which is not even required. I hope that should not be the part of the Raavan War of Lanka. That is what I am expecting and looking forward to read the book. Let me know what do you think about the War of Lanka. Are you excited to read the book? Are you excited for me to review the book, and are you excited for the final part, or are you excited for the War of Lanka की war में क्या क्या होने वाला है? I hope I hope you are gonna enjoy that book, and looking forward you guys to let me know into the comment section कि आपको क्या लगता है इस book के बारे में. And all other videos I will put in the description. I will put all the book link in the description, so make sure you go and watch that. If you are looking for Ram Chandra series complete review playlist, check out this playlist where I shared all the books or the review about the Ram Chandra series. And if you are looking for the Amish Tripathi books, then check out this video where I shared all the Amish Tripathi books. So that's all for today's video. See you in the next one. Bye bye. Take care.